model, we are having independent variable and dependent variable, and a linear line will be plotted between those dependent and independent variables. So this linear regression algorithm, it works well for the prediction for continuous real valued or numerical variables, such as the variables about sales, salary structures, age, and product pricing. So for marketing forecasting, this linear regression model is preferred. So in this algorithm, it shows that there is a linear relationship between the dependent variable and one or more dependent variables with respect to the independent variable x. So in this, it will show how this relationship will work out to evaluate the value of dependent variable according to the independent variable. So in this regression model, it will provide the sloped straight line that will represent the relationship between the variables. So here you will see that in the diagram, we are having on x-axis the independent variable, and on y-axis we are having dependent variable. So here the dependent variable will increase linearly as the independent variable values will be increased. So the separation line that is between the independent variable and dependent variable, that separation line is known as line of regression. And the various data points are plotted that are close to these line of regression. So here we are having the equation for this linear regression. The equation is regarding y is equal to a0 plus a1 x plus e. Okay, so this is the equation for linear regression. So in this, we are having y as the dependent variable. This dependent variable is a target variable जिसकी value आपने find out करनी है. X is the independent variable, that is the predictor variable. A0 is the interception of the line, and A1 is the linear regression coefficient. E is the random error. Okay. So here the values of X and Y variables are the training data sets for the linear regression model representation. ठीक है, तो इस इक्वेशन के बेसिस पर आपने अपने डेटा पॉइंट्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. आप वैल्यूज पुट करोगे कोफिशिएंट्स की और इनपुट वेरिएबल x की, ठीक है, विद सम एरर फंक्शंस, एंड देन यू विल हैव द आउटपुट वैल्यू. Linear regression model is further categorized into two types known as the simple linear regression and multiple linear regression. So here in simple linear regression, if a single independent variable is used to predict the value of numerical dependent variable, then such linear regression algorithm is known as simple linear regression. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज सिंगल वेरिएबल, ठीक है, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज आल्सो सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, दैट इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल. Linear regression, if more than one independent variable is used to predict the value of numerical dependent variable, then such linear regression algorithm is known as multiple linear regression. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास there are more than one independent variable values with respect to dependent variable. That's why it is known as multiple linear regression. So now we are having this equation, this linear regression line. Okay. So this linear regression line can be defined in two ways. It can hold a positive linear relationship or it can have a negative linear relationship. So how this line will be described in terms of positive linear relationship? So if the dependent variable increases on the y-axis and the independent variable increases on the x-axis, then such relationship is termed as positive linear relationship. ठीक है, आप ग्राफ में भी देख रहे हो कि कैसे आपका जो पॉजिटिव लाइन ऑफ रिग्रेशन इंक्रीजिंग वे में आपको शो हो रहा है. ठीक है, इक्वेशन आपकी एज सच वही है
the regression equation, that is y is equal to a0 plus a1x. ठीक है, a0 और a1 आपके कोफिशिएंट्स हैं, y आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और जो आपकी x है दैट इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, सो इन पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप योर डिपेंडेंट वेरिएबल इंक्रीजेस ऑन द y एक्सिस and independent variable increases on the x-axis in positive line of regression. So this is termed as positive linear relationship. Second is negative linear relationship. In this, if the dependent variable decreases on the y-axis and the independent variable increases on the x-axis, then such relationship is known as negative linear relationship. ठीक है, तो नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप में क्या होगा, आपकी जो वाई एक्सिस पर वैल्यूज हैं, डेटा पॉइंट्स है, वो डिक्रीज होंगे विद रिस्पेक्ट टू डेटा वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, तो इस तरह से आपकी लाइन ऑफ रिग्रेशन जो है वो नेगेटिव लाइन ऑफ रिग्रेशन विल बी देयर. तो यहाँ पर आप फॉर्मूला में देख रहे हो दैट y इज इक्वल टू माइनस ऑफ a0 प्लस a1x. ठीक है, तो माइनस साइन विल इंडिकेट द नेगेटिव लाइन ऑफ रिग्रेशन. So in this way we are having two kinds of regression lines, positive and negative. Next is finding the best fit line. So when we will work on linear regression, our main goal is to find the best fit line. That means the error between the predicted values and the actual values should be minimum. Okay, that's why the line should be best fit. That will contain the least number of errors. For this, the different values of weights or the coefficients of lines a0 and a1 gives the different lines of regression. So we need to calculate the best values for the coefficients a0 and a1 so that we can have a best fit line in which we can calculate the cost function. ठीक है, तो हमने a0 और a1 की वैल्यूज को इस तरह से चूज करना है और उसको अपनी लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन में फिट करना है ताकि हमारे पास जो स्लोप है दैट शुड बी बेस्ट फिटेड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट फंक्शन. ठीक है, हियर इज द कॉस्ट फंक्शन. Cost function in this, the different values for weights or the coefficients of lines a0 and a1 will give the different line of regression, and the cost function is used to estimate the values of the coefficients for the best fit line. The cost function optimizes the regression coefficients or weights to measure linear regression modeling. So we can use the cost function to find the accuracy of the mapping function, which will map the input variable to the output variables. This mapping function is known as hypothesis function. Okay, so to find the cost function, we will use this equation, and that is known as mean squared error equation for calculation of cost function. ठीक है, ये हमने कल भी डिस्कस की थी, मीन स्क्वेयर्ड एरर इक्वेशन. ठीक है, अब सेम यही इक्वेशन को हम कॉस्ट फंक्शन के लिए यूज करेंगे विद सम मॉडिफिकेशंस. Little modification is done into this equation. So we will find the average of squared error, that is between the predicted values and the actual values. ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने कोफिशिएंट्स ऐड किए हैं a0 और a1. So to calculate the mean squared error function, the equation is given as 1 upon n summation of values between i1 to n number of values, and then the MSE, the mean square error function, that is yi minus a1 xi plus a0 square. Here your n will be your total number of observations, yi is your actual value, and this a1 xi plus a0 will be the predicted value. ठीक है, तो इस इक्वेशन के थ्रू यू कैन फाइंड आउट योर कॉस्ट फंक्शन. नेक्स्ट टर्म इज द रेजिड्यूल्स. रेजिड्यूल्स इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू. ठीक है, जब आपके पास एक्चुअल वैल्यू आपकी जो
required value, that is the desirable value that is given to you. When you will find the predicted values, you will subtract the predicted value from the actual value. Okay, and the result after this subtraction or the distance will be comes out, and this is known as residual. So if the observed points are far from the regression line, then the residuals will be high and the cost function will be high. So if the scatter points are close to the regression line, then the residuals will be small and the cost function will be small. ठीक है, तो अभी आपने रिग्रेशन लाइन के आसपास पॉइंट्स देखे थे, यहाँ पर डेटा पॉइंट्स दिस वन. ठीक है, अब आप देख रहे हो कि आपके जो डेटा पॉइंट्स है दैट आर क्लोजली रिलेटेड विद योर लाइन ऑफ रिग्रेशन. ठीक है, इट मींस आपका कॉस्ट फंक्शन और आपका एरर फंक्शन स्मॉल है. ठीक है, इट मींस यू आर क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यूज, मींस द predicted values are very close to the actual values when these data points are close to the line of regression. ठीक है, सो अगर ये जो आपके डेटा पॉइंट्स है दैट आर फार अवे फ्रॉम द लाइन ऑफ रिग्रेशन, then it means there is a huge difference between the predicted values and the actual values. ठीक है, and the error function is more and so the cost function is more. Clear? Cost function is clear? Yes, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. So next is about the gradient descent. So gradient descent is used to minimize the mean square error by calculating the gradient of the cost function. So a regression model uses a gradient descent to update the coefficient values of the line by reducing the cost function. So it is done by random selection of values of coefficient and then iteratively updating the values of values into the cost function to reach at minimum cost values. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, through this gradient descent method we will apply the multiple values of coefficients a0 and a1. ठीक है, those values are randomly chosen. ठीक है, we will put those values into our equation and when we will find that our output is close to the predicted value, then we will select that particular coefficient value. So in this way you can reach the data points that are close to the regression line where the minimum cost function can be achieved. So next is about the performance of the model. The performance of this regression model is that the goodness of fitting line is to be determined. ठीक है, so you should have a line of regression that will fit well into the set of observations. So the process of finding the best model out of the various model is called optimization. So it can be achieved through a R-squared method. So here is the formula of R-squared method. It is equal to explained variation. It is a ratio of explained variations to the total variations. So in basically the R-squared method is a statistical method that is used to determine the goodness of the line of fitting. It will measure the strength of the relationship between the dependent and the independent variable on the scale. The high value of R-square determines the less difference between the predicted value and the actual value, and hence it will represent the good model. Okay, so the preferred value of R-squared method is that it should be high value. It should have high value so that our predicted value is close to the actual value. It is also known as coefficient of determination or coefficient of multiple determination in case of multiple regression. Next are assumptions about linear regressions. So we are having some important assumptions about the linear regression. So when you will try to build a formal model for linear regression, then these assumptions should be taken into mind for the data sets. Those assumptions are that there should be a linear relationship between the features and target. So it will assume
the linear regression model will assume the linear relationship between the dependent and independent variables. Second is it is a small or known multi-collinearity between the features. ठीक है, तो इस केस में क्या है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, दे शुड नॉट एस्टैब्लिश क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर. ठीक है, so if so they should have no collinearity between the independent and the dependent variables between its features. Third assumption is that it has homoscedastically assumption. So it is basically a situation when the error term is the same for all the values of independent variable. So with this, there should be no clear pattern distribution of data in the scattered plot. Next is the normal distribution of error terms. Next assumption. So the linear regression assumes that the error term should follow the normal distribution pattern. If the error terms are not normally distributed, then the interval values will be either too wide or too narrow. So it will create difficulty to find out the coefficient values. Another assumption is known autocorrectness. So in this, the linear regression model assumes no correction, no autocorrelation in error terms. So if there will be any correlation in the error term, then it will be drastically reduced the accuracy of the model. So it doesn't include the autocorrelation between the error terms. So these are the assumptions in linear regression model. So now we will discuss the simple linear regression model. Simple linear regression model have two main objectives. Those two objectives are that the model have the relationship between the two variables and it will forecast the new observations. Okay, so first objective is that the model should have the relationship between the two variables. Means the independent and the dependent variable must hold a linear relationship. So such relationship will be can be between the income and expenditure, experience and salary. ठीक है, so these are the variables. ठीक है, अगर आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है, you can establish model linear regression model for that application. You can also establish the linear regression model for modeling the experience of an employee with respect to its salary patterns. Second objective is it can have forecasting of new observations, such as for weather forecasting applications, in which we can have the relationship between temperature and other parameters, and then we can have the forecasting of the revenue of a company according to the investments in a particular financial year. So you can forecast new observation based on the previous observations by use of this linear regression model. Now, ये इक्वेशन हमने पहले भी डिस्कस की है. We are having a linear regression model equation that is A0 plus A1 x plus E. A0 and A1 are the coefficients. A0 will have A0 will describe the intersection of the regression line, and A1 will describe the slope of the regression line, whether the line is increasing or decreasing, and E is the error term. Next are the steps that are used to build a linear regression model. The first step is data pre-processing. ठीक है,
in data pre-processing, we will create a simple linear regression model. We will import the data. In first step, we will import the data from the libraries, so which will help us to load the data set and plot the graphs, and will create a simple linear regression model input values. ठीक है, तो अगर आप अपने आप अपना जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, अगर आप पाइथन में कर रहे हो, ठीक है, या आप मैटलैब में कर रहे हो, या आप कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप होगा अबाउट डेटा प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, जो आपका इनपुट ट्रेनिंग डेटा है उसको आप इंपोर्ट करोगे, ठीक है, फ्रॉम द लाइब्रेरीज. ठीक है, एंड देन दैट डेटा विल बी इंपोर्टेड इनटू योर स्क्रीन. ठीक है, सो यू विल सी दिस काइंड ऑफ डेटा सेट. अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो, यू हैव अ डेटा सेट इन विच वी आर हैविंग 3 कॉलम्स, इंडेक्स, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी. ठीक है, अब आपने ये जो डेटा सेट इंपोर्ट किया है, that is with respect to prediction of a salary of any employee with respect to its experience. ठीक है, तो आपने ये वाला एप्लीकेशन के लिए मॉडल, रिग्रेशन मॉडल बिल्डअप स्टार्ट किया. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आपकी डेटा प्री प्रोसेसिंग. आपने अपने डेटा को इंपोर्ट करना है फ्रॉम द लाइब्रेरीज और आपने उसको अपनी स्क्रीन पर फोरकास्ट करना है. देन सेकेंड स्टेप इज we will need to extract the dependent and independent variables from the given data set. The independent variable is here the year of experience and the dependent variable is the salary. ठीक है, तो हमने अब हमारे पास जो डेटा सेट है इसमें से हमने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है. ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है. यहाँ पर जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है ईयर ऑफ एक्सपीरियंस और जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपकी सैलरी. नेक्स्ट इज आफ्टर दैट यू नीड टू एक्सट्रैक्ट द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द गिवन डेटा सेट. And you will have the code for separation of that. Third step is about, अब आपने दोनों को आपस में स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि आपके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों को आपस में आपने सेपरेट आउट कर लिया है. ठीक है, आपके एक्स और वाई वेरिएबल दोनों आपस में सेपरेट आउट हो गए. So now we have separated both the variables into the test set and the training set. ठीक है, we have 30 observations in which we are having total 30 observations in which we will take 20 observations for the training set and 10 observations for the test set. And we will split our data set so that we can train our model using the training data set and then test the model using test data set. ठीक है, so here is a code for that. We will not go into the details of this programming. Just we have to understand the basic concept how this model will work. Okay. So after executing the code for this data training set and test set, we will get the test data set and the training data set. In this way, we will have the values for 20 values for training data set and 10 values for test data set. So the next step 2 is after that we are having to apply the fitting function into the training set. Okay, now we will apply the fitting function into the training set. So now we will fit our model to the training data set. For that we will import the linear regression class of the linear model library from the scikit-learn. That is for your Python programming, the scikit-learn. And after that, we will import the class that are going to create an object of the class. And then we are having the code for that fitness function. So in this, the fitness in brackets is a method that is used to fit our simple linear regression object to the training set. And then we will pass the training values of X and Y variables.
from the training data set for the dependent and independent variables. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने मॉडल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज को इंपोर्ट करना है और उसको फिटनेस फंक्शन में पास करवाना है. थर्ड स्टेप इज प्रेडिक्शन ऑफ टेस्ट सेट. ठीक है, जिस तरह से हमने ट्रेनिंग सेट को इंपोर्ट किया वैसे ही हम अब टेस्ट सेट की वैल्यूज को भी इंपोर्ट करेंगे. So in dependent variable is salary, independent variable is experience. So now in our model, we are ready to predict the output for the new observations. So in this step, we will provide the test data set, new observations to the model to check whether it can predict the correct output or not. Okay, so now we will create the prediction vector for y and x variables, which will contain the predictions of the test data set and the prediction of training data set. ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप फाइनल स्टेप पे हो, आप अपने प्रेडिक्शंस वैल्यू को टेस्ट और ट्रेनिंग सेट के लिए अप्लाई करोगे टू दिस कोड. ठीक है, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड you will have the two variables y prediction and x prediction that will generate the variable values for the salary predictions, for the training set and the test set, and then you will have the output for that. So you can check the variable by clicking the variable exporter option in the IDE screen, and then you will compare the result by comparing the prediction values with the test values, and you will check how much error is there and how much your model is performing good or which kind of features. उसके बाद आपका है नेक्स्ट स्टेप विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग सेट रिजल्ट्स. ठीक है, अभी आपने ग्राफिकली कैसे अपने आउटपुट को प्लॉट करना है, दैट इज अबाउट विजुअलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग सेट रिजल्ट्स. फॉर दिस यू विल हैव द function known as scatter function. We will use the scatter function from the Python library that will create a scatter plot of your observations. So in the x-axis, we will plot the year of experience of employee. On the y-axis, the salary of the employee. So in this function, we will pass the real values of training set, which means a year of experience, and on the y-axis, salaries, and the color of observations. ठीक है, अब आप यहाँ पर ये ग्राफ में देख रहे हो, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ प्लॉट फ्रॉम दिस स्कैटर आउटपुट लाइब्रेरी. ठीक है, यू विल हैव द लीनियर रिग्रेशन लाइन एंड दीज आर ग्रीन पॉइंट्स आर द प्लॉट्स. ठीक है, तो फर्स्ट आपका यहाँ पर आप देख रहे हो, you will import various functions like the plot function, title function, x label function and y label function from the Python library. ठीक है, now the function that is your plot function. This function will plot the year of experience for the training set for the predicted salary. ठीक है, and your next is your title function. It will plot the functions related to the salary versus experience into the training data set, and then you have label x label and y label functions that will plot the x axis and y axis, and then you finally you will get the graph between x and y axis. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका जो ये वाला मॉडल है इसमें जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, दैट आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द लाइन ऑफ रिग्रेशन. ठीक है, और आपका लीनियर ग्राफ वेरी कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड सैलरी. ठीक है, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस एम्प्लॉय का इंक्रीज हो रहा है वैसे उसकी सैलरी भी इंक्रीज हो रही है, एंड द डेटा पॉइंट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द लाइन ऑफ रिग्रेशन. सो दिस मॉडल कैन बी कंसिडर्ड एज ए गुड मॉडल फॉर द गिवन ट्रेनिंग सेट. So in step 5, you can visualize your output. So in this way, you can have a linear regression model. ठीक है,
अभी आपका ये वाला ग्राफ था जो दैट इज अबाउट योर ट्रेनिंग सेट। जो आपका नेक्स्ट ग्राफ है इट विल शो दैट द ग्राफ बिटवीन ग्राफ फॉर द टेस्ट सेट। ठीक है, यहाँ पर आपने 10 जो अपनी ऑब्जर्वेशन अप्लाई की है दैट इज फॉर योर टेस्ट सेट। ठीक है, सेम टाइटल, लेबल, प्लॉट और स्कैटर फंक्शन यूज करोगे इन टेस्ट सेट ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है टेस्ट सेट में दैट आर लेबल्ड इन ब्लू कलर और जो आपकी प्रेडिक्शंस है दैट आर लेबल्ड इन रेड रिग्रेशन लाइन। ठीक है, एंड दीज ऑब्जर्वेशंस आर वेरी क्लोज टू द रिग्रेशन लाइन। सो दिस सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज गुड मॉडल एंड इट कैन मेक द गुड प्रेडिक्शंस। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी आपके पास अगर वेरिएबल्स अवेलेबल है तो आप इस तरह से अपने लीनियर मॉडलिंग के थ्रू अपने आउटपुट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स बताई हैं, प्रेडिक्शंस ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, प्रेडिक्शंस ऑफ दिस salary marketing trends. You can easily use this model for future forecasting for these kind of applications. ठीक है, समझ आ गया सबको? Yes, ma'am.